Hello, Bacho. Let's read the question. So the question says, read the passage given below. The Nobel Prize is an international award administered by the Nobel Foundation and is based on the fortune of Alfred Nobel, a Swedish inventor and an entrepreneur. The Nobel Prize is awarded for the best contribution in the fields of physics, chemistry, medicine, literature, and to the person who has contributed by and large to bring peace on earth. In 1968, Sweden's central bank established Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in the memory of Alfred Nobel. So बच्चों, ये पहला जो पैराग्राफ है पैसेज का वो ये बताता है कि नोबेल प्राइज एक इंटरनेशनल अवार्ड है जिसको एडमिनिस्टर करता है नोबेल फाउंडेशन, और ये रखा गया था अल्फ्रेड नोबेल के बाद, जो एक स्वीडिश इन्वेंटर है, एंटरप्रेन्योर थे। ये अवार्ड उनको दिया जाता है जिनका बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, और जिसने पीस ऑन अर्थ पे बहुत काम किया हो, जिसने अर्थ पे पीस लाने का काम किया हो। 1968 में एक स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने एक स्वर्जिस रिक्स बैंक प्राइज निकाला था, एस्टैब्लिश किया था इन इकोनॉमिक साइंसेज एंड द मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। Now, a look into history of recipients of award reveals that only 57 women have received the award compared to 873 male recipients. There are various historical reasons for this is the case, but the trend appears to be improving. तो जो रेसिपेंट्स थे, मतलब जिनको ये अवार्ड मिला था, उसमें ये पाया गया कि सिर्फ 57 वुमेन थे जिनको अवार्ड मिला गया कंपेयर टू 873 मेल्स जिनको मिला गया। और अब जो ट्रेंड हो रहा है ये इंप्रूव हो रहा है। Now, this is the graph or trend. Now, Gordon Hansen, the permanent secretary of Royal Swedish Academy of Sciences, said, while more women are being recognized now compared with previous decades, only about 10% of the professors in natural sciences in Western Europe or North America are women. Even if lower, if you go to Cast Asia, all over the world, the number of men working in the STEM fields is much higher than the number of women. तो बच्चों ये बताता है गॉर्डन हैंसन, जो परमानेंट सेक्रेटरी है ऑफ रॉयल स्वीडिश एकेडमी, कि ज्यादातर स्टेम फील्ड्स में मेन काम कर रहे हैं rather than women. Hansen emphasized that they have made sure to identify the problems and also learn about subconscious bias in the prize awarding committees and academics. We have had lectures by sociologists, we have had group discussions, we have put in quite a lot of effort into it, he said. तो बच्चों, हैंसन जो परमानेंट सेक्रेटरी हैं ऑफ रॉयल स्वीडिश एकेडमी, उन्होंने एम्फसाइज दिया है एंड ही इज सेइंग कि हमने बहुत एफर्ट डाला है टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। नाउ, on the basis of your understanding of the passage, answer question given below. According to the passage, Gordon Hansen says that there are option A, more female scientists in East Asia than in Europe. Option B, fewer male scientists than female scientists in Europe. Option C, fewer male scientists being considered for recognition now, or more female scientists being recognized for their work now. Option D. So बच्चों, अगर पहला ऑप्शन पढ़े मोर फीमेल साइंटिस्ट इन ईस्ट एशिया देन इन यूरोप, नहीं, तो ये तो पैसेज में साफ साफ लिखा था कि दिस इज नॉट द केस. ऑप्शन बी, फ्यूअर मेल साइंटिस्ट देन फीमेल साइंटिस्ट इन यूरोप, नो, मेल साइंटिस्ट अभी भी ज्यादा है देन फीमेल साइंटिस्ट इन यूरोप, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द केस, सो वील रिजेक्ट दैट. ऑप्शन सी, fewer male scientists being considered for recognition now, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Now also the history is changing, but now also the male scientists or more male scientists are being considered for recognition now. So the correct option is option D, which is more female scientists being recognized for their work. So the correct option is option D. I hope you understood it well. Best of luck.